Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So class, in our previous session, as you all know that we have started with the new chapter, that is chapter number 6, division. Okay, so in the previous session we have done the introduction of the chapter number 6, that is what is division, what is the relationship between multiplication and divisions, okay, and how what are the various division facts of multiplication facts. So these things we have already discussed. So now we will start with the exercise, that is 6.1. okay, so in this exercise we will start with how to what are the possible division facts of the given multiplication facts. तो हमारे पास जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स जो दिए हुए हैं उनके जितने भी पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हैं दैट वी हैव टू फाइंड आउट. क्लियर? चलिए, सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. लिखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1. दिस इज द एक्सरसाइज 6.1. And the first question is, so I'm starting with the question number 1. Actually, it's not question number 1, so there are various parts of the given question. For each of the following, write all possible division facts. तो हमारे पास जितने भी numbers दिए हुए 1 to 6 questions are given, and we have to write down the division facts for the given numbers. Okay, so let's write down. So we have to write the division. Write the division facts. हमें क्या लिखना है? Division facts. Okay. So here the question number 1 is 8 into 6 is equal to 48. 8 into 6 is equal to 48. So this is a multiplication fact that is given here. तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया हुआ बेटा, दैट इज 8 into 6 इज इक्वल टू 48, एंड वी हैव टू राइट डाउन द डिवीजन, ऑल द पॉसिबल डिवीजन फैक्ट्स फॉर दिस. हमें इसके जितने भी पॉसिबल डिवीजन फैक्ट्स हैं वी हैव टू राइट दैट. तो देखिए डिवीजन फैक्ट्स for division facts for 8 into 6 is equal to 48 is. अब देखिए इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स के जितने भी पॉसिबल डिवीजन फैक्ट्स हैं दैट वी हैव टू राइट डाउन. सो दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ 8 and 6 इज 48. सो दैट मीन्स अब देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रिलेशनशिप जो हमने किया था बिटवीन the first relation between the multiplication and the division that we have done, so it will be applicable here. देखिए कैसे 8 into 6 is equal to 48. So if you multiply 8 with 6 you will get 48, and so in this we will do the first, we will follow the first relationship between that we have discussed between the multiplication and the division. So the first is the first relationship between the multiplication and the division that we have discussed was every multiplication fact with the two distinct numbers. Every multiplication fact with the two distinct numbers gives us two distinct division fact. So that means अगर हमारे पास दो numbers के साथ multiplication facts है तो वो जो हमें आंसर देगा that will also, so the division facts that it will give us, it will also be the only two. तो देख अगर हम टू डिफरेंट नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ओके, एंड वी फाइंड इट्स प्रोडक्ट, ओके, सो वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, सो द डिवीजन फैक्ट विल बी 2 ओनली. बट हमने सेकेंड रिलेशनशिप दैट वी हैव डन, इफ़ वी मल्टीप्लाई टू सिमिलर नंबर्स, अगर दो सेम जैसे नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट ओनली वन डिवीजन फैक्ट्स. सो बट इन दिस वी यू कैन सी as you can see here we are having two different numbers. Okay, so that means we will be having two division facts of the given number. So देखिए two division facts will be
देखिए प्रोडक्ट इज 48, सो फॉर दैट वी विल डिवाइड 48, डिवीजन फैक्टर इज 48 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6। देखिए जब हम इसके प्रोडक्ट को इन दोनों में से किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे so the other number will be the answer. So when we divide 48 with 8 you will get 6, when we divide 48 with 6 you will get 8. Okay, second division factor is 48 divided by 6. Another number will be the answer, that is 8. Okay, if you want you can check it as well. देखिए इसको आप चेक भी कर सकते हैं how ऐसे. So इसको रफ में 48 divided by 8, 48 divided by 8, 8 6 are 48, 8 6 are 48, minus 48 minus 48, nothing is left, and here the number is 6. Okay, next is 48 divided by 6, 48 divided by 6, 6 8s are 48, 48 minus 48, nothing is left, so here the answer is 8. So that means देखिए जब हमने 48 को 8 से डिवाइड किया we got 6, 48 को 6 से डिवाइड किया we got 8. So that means जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमने प्रोडक्ट निकाला क्लास. ओके, सो जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमने प्रोडक्ट निकाला. ओके, एंड उसी प्रोडक्ट को इफ यू मल्टीप्लाई विद वन नंबर द अनदर नंबर विल बी द आंसर, अनदर नंबर विल डिवीजन फैक्ट, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद दिस वन दिस विल बी आवर डिवीजन फैक्ट. सो दिस इज द डिवीजन फैक्ट. ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, यू हैव नॉट आपको कैलकुलेशन शो नहीं करनी इस चीज़ की. सो दिस इज जस्ट आई हैव टोल्ड यू जस्ट फॉर जस्ट to see that is it true or false. Okay, so division facts of two different numbers, sorry the multiplication, if we multiply two different numbers the division we will be having the two division facts. So ये हमारे पास दो division facts हैं. Clear? चलो moving next to the second one. The second is that is 62 multiplied by 2. The second is 62 multiplied by 2 is equal to 124. 62 multiplied by 2 is equal to 124. So again here we are having multiplication fact of two different numbers. यहाँ पे भी हमारे पास दो अलग numbers का multiplication fact है. ओके, सो अगेन अगर इसके दो डिफरेंट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बेटा है हमारे पास, सो इन दैट केस जो हमारा डिवीजन फैक्टर होगा दैट विल बी ऑफ दैट विल वी विल बी हैविंग ओनली टू डिवीजन फैक्ट्स. तो अगर हमारे पास हियर वी आर हैविंग द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, सो वी विल बी हैविंग इट विल गिव अस टू डिवीजन फैक्ट. तो ये भी हमें दो डिवीजन फैक्ट्स देगा. ओके, सो दैट मीन्स नाउ वी विल कैलकुलेट, वी विल राइट डाउन द डिवीजन फैक्ट ऑफ दिस. Division fact of 62 into 2, 62 into 2 is equal to 124. Division fact of 62 into 2 is equal to this. अब इसका division fact क्या होगा? So the division fact of this will be, that is, if we divide 124 with 62, if we divide 124 with 62, we will get 2 as quotient. Similarly, when we divide 124, okay, similarly when we divide 124 with 2, when we divide 124 with 2, the number we will get that will be 60. Okay, so दोनों ही number से we will get our division fact. This is the division fact. So division fact of 62 into 2 is division fact of 62 into 2 is equal to 124 is 124 divided by 62, that is 2. 124 divided by 2 is equal to 62. तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन फैक्ट्स. क्लियर? So you can pause your videos here and note down this question number 2 in your notebooks. Chalo, moving next to the third one.
now we are moving to the third question. The third is 83 into 3 is equal to 249. Third is 83 into 3 is equal to 249. So this is another multiplication fact that is given in the question, and again we have to find the division fact of this number. So this multiplication fact, इस multiplication fact का हमें क्या ढूंढना है? We have to find its division facts. So we have to find the division fact of this multiplication fact. अब वो कैसे ढूंढेंगे बेटा? देखिए, again the product of 83 into 3. So if you multiply 83 with 3, you will get 249. That will be your multiplication fact. So for finding its division facts, so you have to divide the product. देखिए अगर हम 249 को, when we divide 249 with 83, you will get 3 as your answer, and when we divide 249 with 3, the answer will be 83. So this is division fact. Okay, चलिए लिखते हैं इसको proper form में. So now we have to write in the proper form. लिखिए division fact. Division fact of 83 into 3 is equal to 249 is, so division factor of 83 into 3 is equal to 249 is 249 divided by 83. 249 divided by 83, that will be 3. And similarly 249 divided by 3, the answer, the question will be 80. So this is the division fact of our given multiplication fact. 83 into 3 is equal to 249. Okay. So this is the multiplication fact, and these are the two division facts of the given multiplication fact. So you can pause your videos here and note down the solution of question number 3 in your notebooks. Moving next to the question number 4. So now we are moving to the next question, that is question number 4. Question number 4 is, the question number 4 is 5 into 5 is equal to 25. 5 into 5 is equal to 25. देखिए 5 into 5 is equal to 25. So this is the multiplication fact which has this multiplication fact has both similar numbers. इस multiplication fact के देखिए दोनों numbers जो हैं क्या similar. This multiplication fact has both similar numbers. This is also 5 and this is also 5. So this multiplication fact has both similar numbers. So दोनों के similar numbers हैं. Okay, 5 and 5. So this multiplication has both similar numbers. तो देखिए, if you remember, while doing the relationship between the multiplication and division, जब हमने relationship between multiplication and division किया था in the last session, so at that time I have told you, so the multiplication fact has both similar numbers. अगर multiplication fact के जो दो numbers हैं, they both are same, okay, then we get only one division fact. अगर हम दोनों numbers जो हैं, तो multiplication जो है हमारी, उसके जो दोनों numbers they both are same, so in that case you will get only one division fact. Because अगर आप 2 भी करोगे तो वो दोनों same होंगे, तो इसलिए हम we will consider a common division fact, that is 1. So if a multiplication fact has
two similar numbers or two same numbers, or the multiplication fact has two same numbers or similar numbers, that they will be having only, they will give us only one division fact. Okay, तो देखिए इसका सिर्फ एक डिवीजन फैक्ट होगा. So what will be that? देखिए division fact of 5 into 5 is equal to 25 is division fact of 25 into 5 is equal to 25 is 25 divided by 5. 25 divided by 5 and the answer will be 5. देखिए अगर पहले आपने इस 25 को इस 5 से डिवाइड किया तो 5 आया, फिर अगेन आप उसको इस वाले 25 से डिवाइड करेंगे. इफ वी डिवाइड दिस 25 विद अनदर 5, द आंसर विल बी 5. तो देखिए बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम है, सो दैट इसका कोई मतलब नहीं है. सो वी कैन राइट द सेम डिवीजन फैक्ट्स. So that's why we say if a number, okay, so the multiplication fact of two similar number, sorry, the division fact, this is if the multiplication fact has both similar numbers, they give us only one division fact. Okay, अगर हमारे multiplication fact जो है उसके दोनों नंबर सिमिलर है, so they give us only one division fact. Okay. So this is the solution of question number 4. So you can pause your videos and note it down in your notebooks. Chalo. Moving next to the fifth one. Okay, now we are moving to the fifth question here. The fifth question is 6 into 6 is equal to 36. The fifth is 6 into 6 is equal to 36. Okay, so again in this as well we have to find its multiplication fact. इस multiplication facts के भी हमें बताना है कि maximum कितने division facts possible हैं. So how many division facts of this given multiplication fact is possible? Again you can see just like the previous question number 4, this multiplication also has two similar numbers. तो पिछले वाले जो हमने अभी क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें था 5 into 5, उसमें भी जो दोनों हमारे नंबर्स थे they both were 5. So that's why we were having only one division fact. So in this question as well, the multiplication fact is of both. The multiplication fact has both similar numbers. Okay. इसमें भी बेटा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैज़ बोथ सिमिलर नंबर्स. तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जो है उसके दोनों नंबर्स क्या है सिमिलर. ओके, तो दोनों सिमिलर है. सो अगेन द सेकेंड रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन विल बी applicable here as well. Okay, if a multiplication fact has two division, so the multiplication fact, if a multiplication fact has two similar numbers, it gives us only one division fact. ओके, तो अगर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के दो सिमिलर नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन फैक्ट निकाल रहे हैं तो इट विल गिव अस ओनली वन डिवीजन फैक्ट. तो लिखिए डिवीजन फैक्ट, लिखिए डिवीजन फैक्ट, of 6 into 6 is equal to 36. Division fact of, if a multiplication fact has two similar numbers, so it will gives us only one division fact. So that the division fact of 6 into 6 is equal to 36 is, इसका division fact हमारा सिर्फ एक होगा. So that will be 36 divided by 6 and the answer is equal to 6. So the division fact of 6 into 6 is equal to 36 is 36 divided by 6, that is equal to 6. So that means this question also has only one division fact. Okay, so this is the solution of
question number 5. So you can pause your videos here and note it down in your notebooks. Okay? Chalo. Moving next to the question number 6. Okay, so now we are moving to the 6th question of exercise 6.1. The question number 6 is 13 into 13 is equal to 169. 13 into 13 is equal to 169. Okay, so again we have to find the division fact of the given multiplication fact. तो हमारे पास ये जो multiplication fact बेटा दिया हुआ है, उसका भी हमें क्या division fact निकालना है. ओके, तो देखिए इससे पहले जो दोनों हमने सम किए थे तो दे वर ऑल्सो लाइक दिस. तो दे वो उनके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में दे वर हैविंग टू सिमिलर डिजिट. तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में वी आर हैविंग द 2 सिमिलर डिजिट. सो दैट मीन्स इसके भी हमारे कितने डिवीजन फैक्ट्स होंगे. सो इन दिस एज वेल वी विल बी हैविंग ओनली 1 डिवीजन फैक्ट. ओके, सो जस्ट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. करो इसको अपने आप, ट्राई इट. ओके, करिए इसको ट्राई बेटा अपने आप. चलिए, नाउ लेट्स सी वेदर यू हैव डन इट. कि डिवीजन DIVISON, दैट इज डिवीजन फैक्ट ऑफ 13 into 13 is equal to 169 is, अब इसका डिवीजन फैक्ट क्या होगा. सो दैट विल बी 169 divided by 13 is equal to 13. Okay, so again I am repeating the same sentence. The multiplication fact that is having two similar numbers, they will be having only 1 division fact. So that is what we have written. So this is the solution of question number 6 of exercise 6.1. You can pause your videos here and note it down in your notebooks. Chaliye, moving next to question number 7. Now we are moving to the next question, that is question number 7. The question number 7 is, write the multiplication fact for each of the following division facts. तो देखिए अब हमारे पास डिवीजन फैक्ट्स दिए हुए हैं. वी हैव टू राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. अब हमें रिवर्स उल्टा करना है. पहले हमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिए थे, हमें उसका डिवीजन फैक्ट निकालना था. नाउ द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट डिवीजन फैक्ट इज गिवन, अब हमसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट निकालना है. ओके, सो नाउ वी हैव टू रिवर्स इट. चलिए देखिए, so now we have to find the or write the multiplication fact of the given division facts. Okay, so we have to write the multiplication, that is multiplication fact of the given number. तो देखिए the number is 7th is 28 divided by 7. 7th is 28 divided by 4 is equal to 7. So this is the division fact that is given here. तो देखिए हमेशा हम प्रोडक्ट में से एक नंबर को डिवाइड करते हैं, हमारे पास दूसरा नंबर हमारा आंसर आता है. ओके, जो कि हम कहते थे डिवीजन फैक्ट में. नाउ हेयर द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज हेयर. सो नाउ सॉरी, हेयर वी हैव टू राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. तो उसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स, जस्ट रिवर्स. सो ओके, दिस इज द प्रोडक्ट एंड दीज आर द 2 डिफरेंट नंबर्स. तो हम देखो, जब हम मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन फैक्ट में आते थे तो जो हमारा प्रोडक्ट आता था उसको हम एक नंबर से डिवाइड करते थे, अनदर नंबर वॉज द आंसर. सो इन दिस एज वेल, so here the product is given, these are the 2 numbers, so you have to just simply write the multiplication factor of the given numbers. तो लिखिए
multiplication fact of 28 divided by 4 is equal to 7 is multiplication fact of 28 divided by 4 is equal to 7 is, देखिए two numbers, that is 4 into 7 is equal to 28. 4 into 7 is equal to 28, or you can write 7 into 4 is equal to 28. So this is how you are going to write the multiplication facts of the given division fact. तो देखिए हमारे पास डिवीजन फैक्ट दिया हुआ था, हमने उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट निकालना था, जो कि हमने निकाला है. ओके, so this is how you are going to write down the multiplication fact of the given numbers. ओके, अब देखिए एक चीज़, अब मैं इसको आपको एक चीज़ बतानी है. हमने यहाँ पे 4 into 7 या 7 into 4 दोनों लिखे. इफ़ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस चैप्टर आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी मल्टीप्लिकेशन की. इफ़ वी चेंज द पोजीशन ऑफ द नंबर्स, और इफ़ वी चेंज द पोजीशन ऑफ द नंबर्स, द प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी सेम. अगर हम 4 into 7 लिखें या 7 into 4 लिखें, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी सेम. सो इसलिए हम बेटा जब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखते हैं किसी भी डिवीजन फैक्ट का, तो हम उसको सिमिलर जो दो लिखते हैं, बिकॉज उसकी प्रोडक्ट से उसका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता. इसकी नंबर से हम अगर इसका नंबर चेंज कर देंगे, इफ़ वी चेंज द पोजीशन ऑफ द नंबर, द प्रोडक्ट विल बी सेम. ओके, सो दैट्स वाई वी डोंट राइट बोथ ऑफ द नंबर्स. सो वी विल सिंपली राइट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऑफ 28 divided by 4 is equal to 7 is 4 into 7 is equal to 28. ओके, चलिए मूविंग नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नंबर 8. अगेन क्वेश्चन नंबर 8 का भी हमें वी हैव टू राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. द क्वेश्चन नंबर 8 एज वेल. देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर इज 48 divided by 8 is equal to 6. 48 divided by 8 is equal to 6. So we have to write the multiplication fact of this. लिखिए multiplication fact of 48 divided by 8 is equal to 6 is, okay, so the multiplication fact of this will be 8 into 6 is equal to 48. 8 into 6 is equal to 48. ओके, देखिए इसमें भी हमें सेम वही मेथड, दिस इज द प्रोडक्ट, these are the numbers and the multiplication fact is 8 into 6 is equal to 48. Moving next to the ninth one. Now we are moving to the next question, the ninth one. The ninth is 81 divided by 9 is equal to 9. Again we have to find the multiplication fact for this. So लिखिए multiplication fact for 9 into 9 is equal to 81 is, multiplication fact for 9 into 9 is equal to 81 is, sorry, it's 81, sorry. It is 81 divided by 9 is equal to 9. ये हमारा डिवीजन फैक्ट है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट निकालना है.
That will be 9 into 9 is equal to 80. Okay, so this is the multiplication factor of 81 divided by 9 is equal to 9 is 9 into 9 is equal to 81. Okay class. So with this I am just ending the today's session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a great day.